So, hello students, welcome to M Square Maths Mantra. So basically it's our lecture 9 of our course Number Theory, in which I am providing you proper notes, question practice so that you can score good in IIT JAM, CSIR NET, GATE and other competitive exams जिसमें number theory पूछी जाती है. Basically myself Ayush Gupta, I am gold medalist from NIT Jaipur in MSc Mathematics. So let's start our today's lecture. So basically in today's lecture, we will understand what is the meaning of congruences, and we will see the properties of congruences and some questions based upon the congruences. Okay, so write down the first heading, congruences. इसमें लिखिए let n be a positive integer and two integers and write down two integers a and b are congruent modulo n are congruent modulo n if n divides, see it is the symbol of division, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है, n divides a minus b. That is, let's suppose कि मैंने यहाँ पे लिखा that a congruent b modulo n. So here it is the symbol of congruence. कि अगर हमारे पास कोई दो इंटीजर्स हैं a and b and they are congruent to each other with modulo n, then we can write here that this is possible if n divides a minus b. For example, मान लीजिए कि हमने कोई दो नंबर्स लिया यहाँ पे 7 congruent 5 modulo 2, तो क्या ये ट्रू है? सो वी विल चेक इट. यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ देन 2 divides 7 minus 5, so we can write here that 2 divides 2 and this is true. So yes, it is correct. Let's take any other example. For example, if I take 7 modulo 6, 7 congruent 6 modulo 2, then what happened? Is it true or not? So मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 divides 7 minus 6, so which means 2 divides 1, which is not true. So hence we can write here no, it is wrong. So in this way we can write the congruence of any two integers with their modulo. So let's take any other example. 25 congruent 5 modulo 10. Is it right or wrong? So we'll see here 10 divides 25 minus 5. So we can write here 10 divides 20, which is true. So yes, it is correct. Clear? So now write on the next heading. Basically it is the properties of congruence. Properties of congruence. Okay, so write down here the first property. The first property is a congruent a modulo n. Basically it is always true. If it is true, then we can say basically this property is called reflexive property, and where you can suppose let n is greater than 1, then if it is possible that a congruent a modulo n, then this property is called as
reflexive property. Now write down the second property, or I will give some examples of this. Okay, so write down the example. For example, 3 congruent 3 modulo 10. Now see, I can write here 10 divides 3 minus 3. Is it true or not? We can write here that 10 divides 0. So which is true. 10 divides 0. So hence this property is called as reflexive property. Now the second property is, if A congruent B modulo n, then B congruent A modulo n. मीन्स अगर हमारे पास A congruent B modulo n है, और अगर हम ये कह सकते हैं कि B congruent A modulo n भी सेटिस्फाई हो रहा है, then basically this property is called as symmetric property. This property is called as symmetric property. For example, मान लीजिए कि इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने यहाँ पे लिया 25 congruent 5 modulo n, और n की जगह मैंने ले लिया 10. So which is true or not? See, 10 divides 25 minus 5, so which means 10 divides 20, which is true. तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ that 5 congruent 25 modulo 10? Let's see. So we can write here 10 divides 5 minus 25, so which means 10 divides minus 20, which is also true. So in congruence, these two properties, reflexive property and symmetric property, always holds. Now the third property is transitivity. So write down this property. If A congruent B modulo n and B congruent C modulo n, then A congruent C modulo n. For example, लेट्स सपोज कि अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अगर हमारे पास कोई दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं, फॉर एग्जांपल 25 congruent 5 modulo 10 and 5 congruent 35 modulo 10, then we can write here, with the help of this 25 and with the help of this 35, we can write down 25 congruent 35 modulo 10. So this property always holds. This property is called as transitivity. Transitivity property. So congruence always hold these three properties. First is reflexive property, second is symmetric property, and the third is transitive property. Write on the fourth property of congruence. इसमें लिखिए, if A congruent B modulo n and C congruent D modulo n, then अगर मैं इन दोनों का एडिशन कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल A प्लस C, तो ये हमेशा कॉन्ग्रुएंट होगा B प्लस D मॉडुलो n के. दिस प्रॉपर्टी ऑलवेज होल्ड्स. कोई एग्जाम्पल लेते हैं इसका. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमने एक एग्जाम्पल लिया, इफ वी टेक सपोज 25 congruent 5 modulo 10 and 15 congruent 5 modulo 10, देन सो अगर हमने इनके टपल्स को ऐड कर दिया, फॉर एग्जाम्पल 25 प्लस 15 विच इज congruent टू 5 plus 5 modulo 10,
So we can write here 5 plus 5 10, and it is 4. So 40 congruent 10 modulo 10. Is it true? Let's see. 10 divides 40 minus 10. So which means 10 divides 30. So yes, it is true. So this property always holds. Okay. Now write down the property number 5. इसमें लिखिए if A congruent B modulo n and C congruent D modulo n, then A into C is always congruent to B into D modulo n. Let's take an example. For example, if I see here like 5 congruent 10 modulo 5. See, this always holds because 5 divides 10 minus 5. And if I take 2 congruent 4 modulo 2, or sorry, we should need to take modulo 5 here also, because if it is n, then here it should be n. So let's take modulo 5 here. So I can write like 25 modulo 5, yes, 25 congruent 5 modulo 5. Then see, is it true or not? 5 into 25 congruents 10 into 5 modulo 5. So this we can write here 25 multiplied by 5. So it is 125 congruence 50 modulo 5. So this is true or not? Let's see. 5 divides 125 minus 50. So which means it becomes 5 divides, I think it is 75. So which is true. Hence this property is always hold. Okay, write on the sixth property of congruence. इसमें लिखिए if A congruent B modulo n, then A times C congruence C times, or you can say here B times C modulo n, where C is any integer. C is any integer. For example, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि हमारे पास कोई कॉन्ग्रुएंस है लाइक 2 congruent 6 modulo 4. तो अगर हम इनमें कोई सी लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे सी ले लिया 2, so we can write here 2 multiplied by 2, which is congruent to 2 multiplied by 6 modulo 4. See, it is true or not? So we can write here 4 congruent 12 modulo 4. So we can write here 4 divides 4 minus 12, and hence we can write 4 divides minus 8, which is true. So this property is always hold. But there is a note in this property that converse is not true. Basically, converse is not true. तो इसका भी एक हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कन्वर्स इज नॉट ट्रू के अंदर. फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने यहाँ पे कोई एक नंबर लिया 25 which is congruent to, let's suppose, 10 with congruence modulo 5. So we can write this as 5 into 5, which is congruent to 2 into 5 modulo 5. So if I write here 5 congruent 2 modulo 5, मीन्स एक्चुअली मैंने क्या किया, मैंने इसका कन्वर्स ले लिया. कन्वर्स क्या होता है? कन्वर्स हमें ये बताता है कि अगर हमारे पास ये कंडीशन गिवन है जिसमें हमने सी से एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया है ए और बी में, तो यहाँ से मुझे ये मिल जाए. सो इट्स कन्वर्स इज बेसिकली नॉट ट्रू. सो सी हियर, यहाँ पे हमने क्या किया,
A इंटू सी इज कॉन्ग्रुएंट टू B इंटू सी मॉडलो 5 हमने लिया है, और यहाँ से अब हमने इस C को हटा दिया और A और B के थ्रू हम कॉन्ग्रुएंस चेक कर रहे हैं. So is it true or not? Let's see. So from here we should write 5 divides 5 minus 2, which means 5 divides 3, which is wrong. 5 doesn't divide 3. So which means the converse of this property not true. Okay. So write down the seventh property of the congruence. Write down here, if A is congruent to B with modulo n, then A power k is congruent to B power k modulo n, where k belongs to natural number. For example, let's suppose कि हमने यहाँ पे एक congruence लिया, 2 is congruent to 3 और with modulo 1. So is it true? Let's see. 1 basically divides 2 minus 3. So we can write 1 divides minus 1, which is true. So if I take any k, let's suppose मैंने k की वैल्यू यहाँ पे ले लिया, k belongs to natural number, so we can write k should be 3. So in this case we can write 2 power 3 is congruent to 3 power 3 with modulo 1. Let's see it is true or not. So we can write here 8 is congruent to 27 modulo 1, which is always true basically, because we can see here that 1 divides 8 minus 27, which is true. And basically in this property also the converse is not true. You can write here the converse is not true. So basically now I'm going to start some questions which are asked in our exams. Okay, so it's a very important question. Write down the question based upon the congruence. If AC is congruent to BC mod n, then A is congruent to B modulo n divides by D, where D is equals to question mark. So first option is basically D is nothing but the GCD of A comma B. The second option is GCD, actually that D is nothing but the GCD of C comma N. Third option is D is nothing but the GCD of A comma C. And the fourth option is D is nothing but the GCD of A comma N. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको खुद से सॉल्व एक बार कीजिए. पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड देन सी द सॉल्यूशन. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सी सॉल्यूशन. तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, a इंटू सी इज कॉन्ग्रुएंट टू b इंटू सी मॉडुलो n, एंड हमें एक कंडीशन और गिवन है विच इज a कॉन्ग्रुएंट b मॉडुलो n डिवाइड्स बाई d. दो कंडीशंस हमें यहाँ पे बेसिकली गिवन है. तो अगर हम इसे किसी एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने यहाँ पे लिया लाइक 20 is congruent to 10 with modulo, let's say मैंने ले लिया 5. So we can write down here it is 2 into 10 congruent 2 into 5 with modulo 5. So from here if I see, अगर हमने यहाँ 2 को C मान लिया, means C is nothing but 2, then from here my A is 10 and B is 5. This is our B and this is our C.
सो फ्रॉम हियर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ से इस कंडीशन तक पहुँचने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा 10 is congruent to 5 with modulo 5 divided by। तो अब इस d की वैल्यू हमें यहाँ पे देखनी है कि इस d की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, इसको हम लिख सकते हैं 5 divides d, basically it divides 10 minus 5, so hence we can write here that 5 divided by d divides 5। तो यहाँ पे d की जगह पे मुझे कौन सी जीसीडीज लेनी चाहिए जिससे कि ये डिवाइड कर जाए। तो डेफिनेटली जीसीडी ऑफ, अगर मैंने यहाँ पे c की वैल्यू रख दी, फॉर एग्जाम्पल c इज 2 एंड जो हमारे पास n था 5, सो c जीसीडी ऑफ 2,5 इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं ये प्रॉपर्टी यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये मेरे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा एंड हेंस इट इज ट्रू। सो d is nothing but the gcd of c कॉमा n, बिकॉज जब मैंने यहाँ पे c की वैल्यू पुट करी और यहाँ पे n की वैल्यू पुट करी तो ये हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सो हेंस दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू। सो आई थिंक इट्स अवर ऑप्शन नंबर बी। सो द second option is correct. So on the basis of this question, basically there are some properties or notes. So write down one note. If the GCD of C comma n is equals to 1 and AC congruent to BC modulo n, then in this case we can write down here that A is congruent to B modulo n divides D, and D is nothing but the GCD of C comma n, and since C comma n की वैल्यू यहाँ पे GCD की 1 है, so this can be written as A congruent B modulo n। सी अभी प्रॉपर्टी नंबर हमने पढ़ा था कि आई थिंक इट इज प्रॉपर्टी नंबर 6। दैट प्रॉपर्टी नंबर 6 में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास ए कॉन्ग्रुएंट बी है विथ मॉडुलो एन, तो ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अगर मैं कन्वर्स देखता हूँ कन्वर्स इज नॉट ट्रू। सो यहाँ पे अगर हम देखें इन दिस नोट, सी इन दिस नोट हमारे पास ए सी कॉन्ग्रुएंट बी सी विथ मॉडुलो एन है, लेकिन उसके साथ अगर मैं इस प्रॉपर्टी को भी ऐड कर देता हूँ कि जीसीडी ऑफ सी कॉमा एन इज इक्वल्स टू 1, देन द कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। अगर इस प्रॉपर्टी को मैं ऐड करता हूँ तो हमारे पास कन्वर्स ट्रू हो जाता है। ओके, सो राइट डाउन वन वेरी इंपॉर्टेंट note you can say, or it's a tip, that it is always true basically minus a is always congruent to n minus a with modulo n. Let's see why. So the hint is, here we can write n divides minus a minus n minus a. So this can be written as n divides minus a minus n plus a. So plus minus a will be cancelled out. So basically n divides minus a, which is true. So hence this property always holds that minus a is congruent to n minus a modulo n. Okay, so I'm writing some questions for homework and try to solve these questions and give the answers in the comment box. So you have to find the correct congruence. The first one is minus 5 congruent 15 modulo 20. The second question is, it is minus 2 congruent 25
modulo 23. The third question is 5 congruent 4 with modulo 1. And the fourth question is 4 modulo 16, 4 congruence modulo 2. Okay, so solve all these questions and give me the answer in the comment box. Thank you.